Hello, dear children. The topic for today is measurement. So, what is measurement? Measurement is to find out the value, the length, or the weight, or the capacity. That means, suppose you are going to the market and you want to buy potato. So, what will you say to the shopkeeper? I want 1 kg of potato. And if you want to buy cloth for your dress, then are you going to say, I want 1 kg of cloth? No. You will say, I want 1 meter of this particular cloth to prepare my dress. And if you want to fill, or if you're buying milk from the market, then you will not say, I want 1 kg milk, I want 1 meter of milk. You will say, I want 1 liter milk. Isn't it? So this liter, meter, kilogram, these are all units of measurement. So first of all, we'll study about length. So length, the standard unit of length is meter. Standard unit, the main unit to measure length is meter. We measure, this is the standard unit. Then we have other units. If we have to measure everything, we cannot measure in meter. If we have to measure a small thing, then we measure it in centimeter. If we have to measure a long distance, then we measure in kilometers. Now suppose you are asked to measure this cap of my pen. So you are not going to measure it in kilometer. No. You are not going to measure it in meter. No. But you will measure it in centimeter. In your ruler, you have centimeters. So you are going to measure this in centimeter. It depends how long the thing is, which unit you have to use. Now, if you are buying a cloth, if you'll say, I want in centimeters, so the shopkeeper will take too long to measure because centimeter is a smaller unit. Meter is bigger than centimeter and kilometer is bigger than meter. And there is one more unit, that is millimeter. This is also found in your ruler, in your scale. You can see millimeter. Millimeter is smaller than centimeter. Okay, so if you have to measure very small unit, very small thing, then you will measure it in millimeter. Understood? If you have to measure little bigger thing, then you will measure it in centimeter. If you are buying cloth, you will buy it meters. And suppose you have to measure the distance between your school and your house, then you will measure in kilometer. Then you are going to measure in kilometer. Isn't it? So I'll show you the conversion, how to convert. See, 1 centimeter, or we'll start like this, 10 millimeter is equals to 1 centimeter. Okay, then 100 centimeter is equals to 1 meter, and 1000 meter is equals to 1 किलोमीटर. आप अपने रूलर में देखोगे ना, एक 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी 10 लाइंस होती हैं. वो 10 लाइंस क्या होती हैं? मिलीमीटर. क्या लाइंस होती हैं वो? मिलीमीटर. तो 10 मिलीमीटर्स का 1 सेंटीमीटर बनता है. और जब हम 100 सेंटीमीटर काउंट कर लेते हैं तो वो 1 मीटर बन जाता है. और जब 1000 मीटर्स हो जाते हैं तो 1 किलोमीटर बन जाता है. Understood? So this you have to learn
by heart. This you have to learn by heart. There should be no confusion in this. Okay, now if you have to convert मीन्स बदलना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में. क्वेश्चन पढ़ना है. फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. किलोमीटर टू मीटर. आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है. किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है. किलोमीटर इज अ बिग यूनिट and meter is a small unit, smaller than kilometer. It is smaller than kilometer. किलोमीटर से छोटा है. आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है. आप देखो, जब आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1 का क्या बन जा रहा है? 1000. क्या बन जाता है? 1000. बड़ा नंबर बन जाता है. क्या बन जाता है? बड़ा नंबर. जब भी कोई आंसर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. अब आपको करना है कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. अगर 3 किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर और मीटर का रिलेशनशिप क्या है? 1000 का. क्या रिलेशनशिप है? 1000 का. तो आप क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 3000 मीटर. क्योंकि आपका आंसर बड़ा आना चाहिए. जब किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं तो आंसर बड़ा आता है. तो जब बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. इज इट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल. 8 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 8000 मीटर. Understood? Now suppose you have 2 units now together, that is 8 kilometer and 600 meter is equals to, आपको तो मीटर में कन्वर्ट करना है. ये वाला तो आपका ऑलरेडी इट इज़ इन मीटर्स. यू हैव टू कन्वर्ट दिस. तो आप क्या करेंगे? 8 इंटू 1000. और ये वाला तो ऑलरेडी किस में है? मीटर्स में है. तो इसको तो हमको चेंज करना ही नहीं क्योंकि ये तो मीटर्स में ही है. ये किलोमीटर में है, इसको हमने चेंज कर दिया. तो क्या आएगा हमारा? 8000 प्लस 600. इसको मेंटली ऐड करना सीखिए. ऐड इट मेंटली. डोंट गो टू द वर्किंग कॉलम लाइक दिस. 8000 plus 600. Now practice. You are in class 4 or 5, so you have to practice like this. 0068. 8600. 8600 मीटर. हमने 600 को नहीं चेंज किया क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर्स में है. बट 8000 को हमने चेंज किया और उसमें फिर 600 को ऐड कर दिया. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ सेम वे अगर आपको क्वेश्चन में आता है कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर. मीटर टू सेंटीमीटर. See, meter to centimeter. Now meter to centimeter, what is the relationship? 100, not 1000. Meter to centimeter, it is 100. Okay, so if you have to convert 3 meter into centimeter, you will write 3 multiplied by 100 is equals to 300 centimeter. 3 meter is equals to 3 into 100, 300 centimeter. 8 meter is equals to 8 into 100 is equals to 800 centimeter. Then suppose it is 8 meter and 60 centimeter. Then
दिस इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 60 is equals to 800 and 60 we will add to it, so together it will become 860 centimeter. Clear? I think you understood. Now the next one I am showing you is centimeter to millimeter. Convert centimeter to millimeter. So 3 centimeter is equals to 3, because here see centimeter to meter, it is the relationship of 10. 1 centimeter is equals to 10 millimeter. So what will we do? 3 multiplied by 10 is equals to 30 millimeter. 8 centimeter is equals to 8 into 10, 80 millimeter. Understood? Same way, if it is 8 meter and then because it is the relationship only 10 का relationship है यहाँ पे only 10, so less than 10, the number should be less than 10. तो हम करेंगे 8 meter and 5 millimeter. So here this is already millimeter, we will not change it, we will change only 8 meter. 8 multiplied by 10 plus 5 is equals to 80 plus 5 is equals to 85 millimeter. Got it? Now tomorrow I'll tell you this, we are going from bigger unit to smaller unit, bigger unit to smaller unit, bigger unit, everywhere we are going from bigger unit to smaller unit, bigger unit to smaller unit, bigger unit to smaller unit. When we are converting from bigger unit to smaller unit, बड़े unit से छोटे unit में convert करते हैं तो multiply करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में करते हैं तो क्या करते हैं. Okay, this video you have to see 2-3 times if you don't understand, but make this very clear in your mind. That's all for this video. Next video I'm going to tell you from smaller unit to bigger unit, what we do when we have to convert from smaller unit to bigger unit. So always keep in mind, when we convert bigger unit to smaller unit, we multiply. Okay, multiply किससे करते हैं? For that you have to learn this table. किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. Is that clear? Now please go through it so that it's clear in your mind. That's all for the video.